हेलो फ्रेंड्स, आप मुझे देख रहे हैं एनवीआर एडवाइजर्स यूट्यूब चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू क्विकली डिस्कस द समरी ऑफ 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग which was held yesterday 12th of June 2020. I repeat, summary of 40th GST council meeting held on 12th June 2020. जो भी ये presentation है, it is basis the press release issued by the government. You know the notification or the actual effect, जब भी वो आएगा तब we will be releasing a new video, but this presentation is strictly on the basis of press release. Running to first announcement, revised late fees for GSTR 3B for earlier periods to clean up the pending matters, pending returns. आपको पता होगा बहुत एक पेंडिंग इशू था बहुत टाइम से, बहुत सारे टैक्स पेयर्स से जुलाई 17 से उनके जीएसटी रिटर्न्स पेंडिंग थे, लेट से जुलाई 18, फरवरी 18, बहुत सारे टाइम से उनके जीएसटी रिटर्न्स पेंडिंग थे, as a result of which they were not able to file the subsequent GST returns because the erstwhile GST returns were not filed. And GST returns की late fees थी 50 rupees per day with a cap of 5,000 rupees CGST, 5,000 rupees SGST, which technically means 10,000 rupees per month per GSTR3 was the maximum late fees which they were liable to pay. And let's say a taxpayer had defaulted for 12 months in a row, he was liable to pay 1,20,000 rupees of late fees. This is again excluding the interest and the tax amount. So there were various representations made by them. The government has finally decided that for the period of July 2017 to January 2020, if the taxpayer is not having any GST liability, any tax liability, he can now file the GSTR 3B with no late fees, nil late fees. And for the corresponding, for the same period, July 2017 to January 2020, अगर taxpayers की GSTR 3B में tax liability है, the late fees would be 500 rupees per month. Now, again, this is 500 rupees per month. इसमें obviously, let's say a taxpayer has defaulted hypothetically GST returns for the month of January. Then again, you may give a logic, 50 rupees per day. Still, even if he files as of now, it has exceeded 10 days. So this 500 rupees is the maximum late fees or the actual late fees which he would be required to pay. Now, as per the press release, ये जो benefit है is available only for the returns filed between 1st of July 2020 to 30th of September 2020. So my advice, today we are sitting at roughly 13-14 June. आप अभी as of now returns file करने की घाई मत कीजिए. You never know if you file the returns now in good faith, the liability may pop up. Wait for 1st of July 2020 and file your returns before 30th of September 2020 and take the benefit of this reduced late fees or no late fees. Second point to note here is revision of late fees is only for GSTR 3B and not for GSTR 1. Third, no refund of late fees already paid while filing such returns erstwhile. So for example, I vaguely remember reading an article in the month of February 2020 that Government of India has till February 2020 collected late fees of roughly 4,100 crores. So obviously, बहुत सारे taxpayers है जिसने पहले good faith में GST returns file कर दिए थे, they won't be getting a refund of late fees already paid. They can, अपने मन को शांत कर सकते हैं कि भी हमारा interest और आगे बढ़ा नहीं. जो 18% interest, the liability of 18% interest must have stopped the moment they had filed their GST returns. And आज अगर वो ये option लेते, although late fees में exemption मिलता, but interest उनका accumulate होता रहता. Nevertheless, ये सब सिर्फ theory बातें हैं. Next part, relief for small taxpayers for GST returns for the month February to April 2020. आपको मालूम होगा, by virtue of notification number 31/2020 central tax dated 3rd of April 2020, गवर्नमेंट ने GSTR 3B की डेट्स एक्सटेंड की थी बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन. एंड जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक था, उनके लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल की ड्यू डेट थी 30th of June, 3rd of July एंड 6th of July. एंड जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर था एंड 5 करोड़ से नीचे था, उनके लिए फरवरी, मार्च एंड अप्रैल की ड्यू डेट्स थी 29 जून एंड 30th June रिस्पेक्टिवली. ये मैं बात कर रहा हूँ अर्लियर नोटिफिकेशन का पार्ट. आज जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इफ अ टैक्स पेयर even defaults these extended dates, then obviously उनको interest भरना होगा if they are filing after the due date specified above, and they would be given the benefit of reduced interest rate of 9% per annum till the period of 30th of September 2020. So normally interest 18% होता था, they would enjoy a reduced rate of interest of 9% if they file their GSTR 3B after the above due dates and before 30th up to 30th of September 2020. In a situation, let's say hypothetically, एक टैक्स पेयर ने 29 सितंबर तक रिटर्न्स फाइल कर दिए फॉर द मंथ ऑफ लेट्स से फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो रिस्पेक्टिव डेट से ऊपर
उधर तक तो उसको इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं है. पोस्ट दिस रिस्पेक्टिव डेट जो यहाँ पे लिखी हुई है, टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, लेट्स से 30th of September, he would be liable for 9% per annum का interest rate. Let's assume a case 2, the taxpayer files his return of GSTR 3B for these months in the month of, let's say, October and November. Then from these dates, इस इन तारीखों से लेके till 30th of September, 9% interest on the tax amount would be applicable, and 1st October से till the date of filing of return, 18% per annum के हिसाब से इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा उन रिस्पेक्टिव टैक्स पेयर्स को. दिस इज नंबर 1. इसमें सस्पेंस क्या है, जो भी ये रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट दिया गया है 9% पर एनम, सिर्फ प्रेस रिलीज में इतना ही डिस्कशन किया गया है. अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि इन केस टैक्स पेयर, लेट से हम डिस्कस करते हैं फरवरी मंथ का, एंड ही इज फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी ऑफ टर्नओवर लेस देन 1.5 crores. The normal due date obviously is 20th of March, with the extended due date 30th of June. Let's say a taxpayer files his GSTR 3B, let's say on 20th of July, and he would obviously get the discounted interest rate of 9% per annum, but the press release is silent on the late fees for this period. Now we will have to wait for the notification to come into picture, ताकि मालूम पड़े कि जो ये discounted period है उसमें late fees भी माफ है, या late fees accumulate होती रहेगी 50 rupees per day के हिसाब से. Now this is again a suspense part. We will have to wait for the notification to get more clarity. Coming to further relief for small taxpayers for GST returns for the period May to July 2020, जिस तरीके से पहले गवर्नमेंट ने स्टैगर्ड वे में वेरियस ड्यू डेट्स और वेरियस क्लास ऑफ पर्सन्स नोटिफाई किए थे, गवर्नमेंट हैज सेड कि फॉर द पीरियड May, June, July they would be further notifying some due dates, and such dates would be up to September 2020. Now आपने देखा होगा यहाँ पे स्लाइड का हेडिंग है रिलीफ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, पीछे भी था रिलीफ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स. Now who is actually a small taxpayer? Small taxpayer is a person, for the purpose of this press release and for the purpose of this slide only, not for GST Act or rules or notification. इस स्लाइड में small taxpayer का मतलब है any taxpayer whose turnover, aggregate turnover is less than 5 crores. Number 1. What is the status of other taxpayers? मतलब for example जिसका turnover 5 crores से ऊपर है, उनके केसेस में पहले गवर्नमेंट ने फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ्स में 15 डेज का ग्रेस पीरियड दिया फ्रॉम द नॉर्मल ड्यू डेट्स. तो फॉर एग्जांपल फरवरी का ड्यू डेट था 20th of March, मार्च का ड्यू डेट था 20th of April, अप्रैल का ड्यू डेट था 20th of May. इन सब रिस्पेक्टिव डेट्स में गवर्नमेंट हैड गिवन 15 डेज का ग्रेस पीरियड wherein they could file their GSTR 3B without any late fees or without any interest. So उस डेट्स में ऑब्वियसली कुछ एक्सटेंशन नहीं है. इन रिस्पेक्टिव फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ में भी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनको कोई फर्दर रिलीफ नहीं दी गई है. जो पहले रिलीफ थी वही एज इट इज है. सिंस देयर वाज नो चेंज इन दोस रिलीफ्स, मैंने उसको इन स्लाइड में रिप्रोड्यूस नहीं किया है. एंड फॉर द मंथ्स ऑफ May, June, July, there is not at all any relief by the government for the taxpayers having turnover above 5 crores, which means May month का GSTR 3B का ड्यू डेट for taxpayers having turnover above 5 crores would be 20th of June, June का होगा 20th of July, July का होगा 20th of August. Coming to next slide, one time extension in the period for seeking revocation of cancellation of registration. आपको मालूम होगा a tax officer, a GST officer can revoke, a tax officer can cancel the GST number on various grounds. A famous or most prevalent ground being the taxpayer has failed to furnish the GST returns. तो अगर taxpayer continuously कुछ months के GST returns file नहीं करता है, the tax officer obviously after giving him opportunity of being heard cancels his GST number. Now in this case, suppose tax officer ने मेरा GST number cancel कर दिया है, the taxpayer has the option to file for revocation of cancellation of GST number within 30 days from the date of service of cancellation of order. Now let's say मेरा cancellation order pass हुआ था 1st of June 2019. I could apply for cancellation for revocation of cancellation of GST number till 30th of June, जो 30 days का time limit है, और say 1st of July. Post such date, I was not eligible to apply for revocation of cancellation of GST number. Obviously, एक condition जो precedent prevailing है पहले भी अभी भी, if you want to apply for revocation of cancellation of GST number, आपको आपके till date returns file करने होंगे. Then only the tax officer would consider your application to revoke a cancellation of GST number. Now this time limit of 30 days has been extended for all the cases where GST number was cancelled till 12th of June 2020. The revised date for all such cases is 30th of September 2020. Now this is a golden opportunity for all the taxpayers
रीजन बीइंग, लेट्स से हाइपोथेटिकली एग्जांपल है, जुलाई 17 में जीएसटी आया था, उसके बाद में रिस्पेक्टिव मंथ्स में जो भी रिटर्न्स फाइल किए थे, एंड लेट्स से इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2017, the taxpayer after that period couldn't file his GSTR returns, and which technically means December 17 से लेकर till date taxpayer had not filed GST returns, and बीच में let's say उसका GST number cancel हो गया होगा somewhere in June or July 2018 hypothetically. जुलाई में अगर उसका GST, जुलाई 2018 में उसका अगर GST number cancel हुआ होता, he was obviously given 30 days to apply for revocation of cancellation of GST number. वो उस टाइम नहीं किया for various reasons, one reason being per month 10,000 rupees का late fees का liability है, और as a case में भी जो भी 50 रुपीज पर डे के हिसाब से, एंड अगर मैं 4-5 मंथ्स में गिनूं तो 40,000 से 50,000 के आसपास लेट फीस आ जाएगी. नाउ लेट्स से उस टाइम पे उसने वो रिवोकेशन का एप्लीकेशन फाइल नहीं किया है हाइपोथेटिकली, नाउ ही कैन फाइल फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी नंबर ऑफ एनी जीएसटी नंबर कैंसिल्ड बाय द डिपार्टमेंट टिल 12th of June, एंड द लास्ट डेट टू फर्निश सच एप्लीकेशन इज टिल 30th of September. एंड अगर वो अभी फाइल करता है, he can obviously take benefit of this revised late fees or reduced late fees or no late fees. तो अगर उसके केस में nil returns है, he would be liable for zero late fees, and उसके केस में अगर कुछ tax liability है, he would be liable to pay late fees of 500 rupees. So this is a one-time extension. This again is to regularize the जो GST numbers cancel हो चुके हैं, they can become a part of this compliant structure, compliant market. This brings us to the end of this presentation. I repeat again, जितने भी 3-4 slides थे, these were purely on the basis of press release released by the government. Notification issue होने में it may take some time, and it may have some changes also. जब भी notification आएगा, we will come out with the video अगर कुछ changes हुए तो. I hope आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो. Please like it and share it with your friends and colleagues to whom this video may be relevant. Thank you.